Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to start a new kind of determiners, that is a quantifiers determiners. So as you all know that we have done the three types of determiners already, that is article or demonstrative and possessive. So this time we will start the quantifiers determiners. So basically, quantified determiners tell us how many or how much of something. यानी ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. क्वांटिफायर्स इसके टाइटल से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हमें एक्सप्लेन करता है, हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ समथिंग. So number before noun are quantifier determinants, means noun से पहले if you see any numbers then that number is belongs to the quantifier determiner. See the examples. I ate 6 biscuits. So biscuits, here the word biscuits is noun and before noun there is some number, that is 6. So it means 6 is quantifier determiners. Alright, so next is the flat. The flats on the dash floor. So the flat on the 6th floor. Okay, तो floor भी क्या है, हमारा एक noun है. noun से पहले जो कि क्या चीजें हो रही है, 6th क्या है, number. So it means this is quantifier numbers. I saw 2000 ants. So ants it's noun and before ant what we use, 2000. 2000 is a number, that's why this is a quantifier determinants. All right, so let's move. So quantifier कौन से determiners होते हैं, let's see. There are so many quantifier determiners like some, any, few, little, more, much, many, each, every, both, all, enough, half, little, whole, less, etc. Alright, so now let's see some examples. There were many people in the street. So people is noun. Before noun we saw here many. Okay, क्या देखा था हमने, many. So many is quantifier noun. Clear? Little knowledge. So knowledge is also a noun, but which noun? Knowledge is a abstract noun. Alright, so little is quantifier noun. Clear? Little knowledge is a dangerous thing. Okay, let's see the definition of the quantifiers determiners. That what do we mean by this determiner? Okay, so quantifier provide approximate or specific answer to the क्वेश्चन. मीन्स या तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमें गिवन होगा या फिर बहुत स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा. हाउ मैनी एंड हाउ मच, कितना है, मतलब क्वांटिटी बेस्ड ये हमको आंसर्स मिलेंगे. राइट, फर्स्ट सी द फर्स्ट वन. आई ओनली टेक अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क विद माई टी. मतलब मैं अपनी टी में क्या लेता हूँ, बहुत कम क्या लेता हूँ, मिल्क लेता हूँ. ऑलराइट, सो लिटिल इज quantifiers determiners. Quite a few people should be coming to the party. मतलब कुछ ही लोग किसमें आएंगे, पार्टी में आएंगे. So here a few is quantifier. I didn't take many holidays last year. So holiday is noun and many is quantifier. I have brought much money with me. So much is quantifier noun, means I haven't brought, मतलब मैं अपने साथ कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लाया. Do you think a lot of people believed what he say? यानी तुम सोचते हो कि बहुत सारे people उस पर believe करते हैं. Do you think what he says, उसने क्या कहा होगा. Most students work hard. So here the word most is determiner. Quantifiers determiner. Most students work hard to pass their exams. Have you got any proof that he committed the crime? मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उसने क्राइम कमिट किया है. So here any is determiner. It takes some effort for me to
to do exercise. So sum is quantifier. तो मीन्स ये क्या शो कर रहे हैं हमें, सम, एनी, मोस्ट, हाउ मैनी और हाउ मच की कंडीशन शो कर रहे हैं. किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, राइट. डू वी हैव इनफ राइस to the last week. So here enough is also sense of how much or how many. So it is also a quantifier determiners. All right. Next is quantifiers are determiners that describe quantity in a noun phrase. क्या describe करता है? Quantity describe करता है किसमें? Noun phrase में. So they answer the question how many or how much. Means वो क्या आंसर करते हैं कि कोई कितना है और कितना ज़्यादा है. On scale from none 0% to 100%. यानी उनकी स्केल कहाँ चलती है कि किसी की परसेंटेज कितनी है, राइट. क्वांटिटी कितनी है, 0% to 100% the scale is running. We use some quantifiers only with countable nouns. We use some other quantifiers only with uncountable nouns, and we use some with countable or uncountable nouns. Means there are lots of quantifier determiners that we use. Means some determiners we use only for countable nouns, some for uncountable noun, and some for both countable or uncountable. So let's start one by one. See. First is no, one and some. So no and any are used in negative and interrogative sentences. No और any कब यूज होते हैं? जब कोई नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब हम no और any का यूज करते हैं. While some is generally used in affirmative sentences. So generally while कब यूज होता है? जब कोई affirmative sentence होता है तब हम किसका यूज करते हैं? Some का यूज करते हैं. As there is no high school in this village. यानी नो का कंडीशन क्या हो रहा है कि जब हम किसी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है कि इस विलेज में कोई भी हाई स्कूल नहीं है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव sentence while any is used in negative sentence. So as I already told you, some किस में यूज होता है? affirmative sentence में, and any is used with negative sentence. And each of them can however be used in interrogative sentence. Means each of them means some or any, both used in interrogative sentences. Like see some example of some. We never use some in negative sentences. Remember one thing, some always used with affirmative sentences or sometimes with interrogative sentences, but it never used with negative sentences. अब see some affirmative example. Please lend me some money. मतलब मुझे कुछ पैसे उधार दे दो. Okay, now see any. We can use any with countable or uncountable noun both in singular and plural numbers. Any एक ऐसा determiner है जिसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ तो यूज करते हैं, बट हम दोनों मीन्स दोनों जो हमारे नंबर है लाइक सिंगुलर और प्लूरल उसके साथ भी हम एनी का यूज करते हैं, बट इन नेगेटिव सेंस और सम इंटेरोगेटिव सेंस. सी द एग्जाम्पल. आई हैवंट एनी स्पेयर पेन. मतलब मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, कोई भी बचा हुआ पेन अब मेरे पास नहीं है. सो नेगेटिव सेंस में हमने एनी का यूज किया. शी डिडंट सेंड मी एनी रिप्लाई. उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया था. नेक्स्ट इज नाउ सी एनी इन सम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इज देयर एनी न्यूज? क्या कोई न्यूज है? सो एनी हमने किस में यूज किया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. डिडंट यू लेंड हिम एनी मनी. मतलब तुम उसे कोई भी पैसा उधार नहीं दोगे. सो आफ्टर हार्डली, स्कैरली एंड बैडली. अब इसके बाद कैसे यूज होगा? लेट्स सी. देयर इज हार्डली मीन्स एनी इज यूज्ड विद हार्डली, स्कैरली एंड आफ्टर. इन वर्ड्स के बाद हम किसका यूज कर सकते हैं? एनी का. सी द एग्जाम्पल्स. देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द मिल्क पॉट. मतलब मिल्क पॉट में हार्डली ही, मुश्किल से ही कुछ दूध बचा होगा. शी हैड स्कैर्सली एनीबडी टू फॉल बैक अपॉन. मतलब वो अब मुश्किल से ही किसी पे गिरेगी, राइट.
Okay, next is all and both. So all and both is also a quantifier determiners. So all denotes the total of many units together. मीन्स ऑल किसको यूनिट करता है, बहुत सारे यूनिट्स एक साथ होते हैं तो उसको ऑल यूज करते हैं. वाइल बोथ शोज द टोटल ऑफ 2 यूनिट्स टुगेदर, जबकि बोथ का यूज करता है ओनली 2. सी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट होल क्लास, राइट, पूरी क्लास की बात करेंगे, then we use all. If we are talking about only 2 students, then we use both. Understand? Okay. He gave me all the mangoes because see here he has some mangoes. जो he subject है उसके पास कुछ mangoes है. He has some mangoes, but he gave me all the mangoes. तो उसके जितने भी mangoes थे उसने क्या दे दिए, सब मुझे दे दिए. So all here denotes a total number of mangoes. Okay, so both Vijay and Vinay are adept in painting. So देखो क्या करा, अडेप्ट की पेंटिंग को किसने, विनय और विजय ने. सो हम यहाँ पे बोथ यूज कर रहे हैं सिर्फ 2 पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए. ऑल राइट, सो ऑल एंड होल. सो अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स ऑल एंड होल. सो ऑल, यू ऑल नो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था ऑल क्या होता है. दिस इज यूज्ड आफ्टर ऑल बट बिफोर होल. मतलब ये तो यूज किया ही जाएगा आफ्टर ऑल, बट पूरा यूज करने से पहले, होल. ऑल राइट, सो ऑल द बॉयज प्लेड ट्रॉन. सारे बॉयज क्या खेल रहे थे, ट्रॉन. द होल क्लास वॉज आउट. अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है. यहाँ पे ऑल द बॉयज मीन्स जितने भी बॉयज है उनके बारे में बता रहे हैं. अब यहाँ पे होल जब यूज किया है क्लास में, होल क्लास में जितने भी चाहे बॉयज हो, whether they are गर्ल्स, तो सबके बारे में यहाँ पे होल लगा के बात हो रही है. सिग्निफाई नहीं किया है यहाँ पे किसी को. ऑल इज यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ऑल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है. ऑल माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट, यानी मेरी सारी बुक्स क्या हो चुकी हैं. सो हियर द बुक्स इज काउंटेबल नाउन. So let's see, many, much, few, a few, less and several. So many denotes number while much denotes quantity. Many denotes क्या करता है, number denote करता है, और much क्या denote करता है, quantity denote करता है. Few is opposite of many. अब few क्या है, is just opposite of many. Many का opposite है, मतलब it's also denotes number. लेस इज द अपोजिट ऑफ मच. अब लेस किसका अपोजिट है, मच का, बिकॉज लेस इज डिनोट्स क्वांटिटी. सेवरल मीन्स मेनी. सेवरल्स का मतलब ही क्या होता है, मेनी. सो इट मीन्स सेवरल ऑल्सो डिनोट्स नंबर. देयर आर मेनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन. सो फ्लावर्स, वी कैन काउंट फ्लावर्स. तो मेनी फ्लावर्स इट डिनोट्स अ नंबर. तो नंबर वी कैन काउंट इट. देयर इज मच शुगर इन स्टॉक, मतलब मच अच्छी शुगर है किसमें, स्टॉक में, बट वी कैन काउंट इट शुगर. हम शुगर को काउंट तो नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी क्वांटिटी बेस्ड बता रहे हैं हमें. ठीक है, हम वी कांट काउंट इट. नंबर्स हम नहीं कर सकते, नंबर में हम शुगर को की क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते. राइट, सो वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, यानी अब फ्यू हॉलीडेज है किसमें, स्कूल्स में. अब फ्यू हमारे किसमें डिनोट हो रहा है, मैनी में. मतलब few is also denote number. So few holidays, so we can count holidays easily. A few students came to attend the lecture. मतलब कुछ students आए थे lecture attend करने के लिए, तो in that condition उन students को भी we can count. Next is study the use of many, a, much, few, a few, the few, little, a little, and the little. So there are so many confusion in these determiners. So let us discuss about them. First is many, a, much. Okay, so many is followed by a plural number, while many by a singular number. Remember this, many अगर single many होगा तो किसको follow करेगा, प्लूरल नंबर्स को फॉलो करेगा. इट मीन्स अगर हम किसी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैनी का यूज करेंगे, बट वाइल टॉकिंग अबाउट सम सिंगुलर नंबर वी यूज मैनी अ. राइट, मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे. सो यस्टरडे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब
yesterday, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे, एब्सेंट थे। तो मैनी किसको, प्लूरल, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे होते हैं। ऑफ कोर्स ये क्या है, स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन के बाद हमने क्या लगाया, मैनी लगाया। सी, much denotes quantity while many denotes number. You all know much denotes क्या करता है, quantity, और many denotes number करता है। I have much work to do, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, right? तो हमने यहाँ पे क्या किया, much का यूज किया। All right, see, few, a few, the few. So few means not many, hardly any. Few का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ के मतलब ना के बराबर हम फ्यू का किसी में यूज करते हैं। अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू जब हम यूज करते हैं तो मीन्स कुछ क्वांटिटी है। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। द फ्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी तो है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है बट है। सपोज अगर हम फ्यू का यूज करते हैं, अगर हमारी क्लास में, इन आवर क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट, तो अगर हम फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स came yesterday, so few student means ना के बराबर students came yesterday. It means around 50 में से आप मान लो 10%. All right, you can say that 10 students only came yesterday. ठीक है, तो few का यूज करिए। A few means some, so some 20 students came. The few means the 30 student came, right? But not many, बहुत सारे नहीं, 30 आए, 50 में से 20 तो absent थे फिर भी। All right. Next is, I have few friends, he is a man of few words. So ये क्या है, I have few friends, मेरे कुछ friends हैं, means ना के बराबर, बहुत कम friends होंगे। He is a man of few words, मतलब बहुत कम शब्दों का मतलब man of few words कहा जाता है। I shall return this book in a few days, यानी कुछ दिनों में, some days में मैं इस बुक को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। Next is, I have read the few books I had. मीन्स मेरे पास जितनी बुक्स थी मैंने उन सबको क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो जितनी बुक्स थी मीन्स अगर 10 थी तो उसमें से इसने 8-9 पढ़ ली होगी, 7-8 पढ़ ली होगी। ऑल राइट, ओके। सो नाउ सी सम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। what do we understand by these determinants? Little means not much, like few, hardly, okay, any. And a little means some, like a few, and the little means not much but all of that much, means the few. So it बहुत similar है with few, the, a few और the few से। So there, but little is used for quantity, all right? So there is and few is used for number. Remember this thing, little is used for quantity and few is used for number. So there is little milk in the jug, hardly any. All right, a little knowledge is a dangerous. तो यहाँ पे कुछ quantifiers meanings भी हैं और they are countable or uncountable. You can see here. First is little. Little is for small और माइनर, मतलब बहुत कम की नीड हो, बहुत स्मॉल में, तो स्मॉल और माइनर के लिए वी यूज लिटिल। लिटिल इज काउंटेबल नाउ, नो, बिकॉज लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी नॉट फॉर नंबर्स, इट्स अनकाउंटेबल नाउ। नेक्स्ट इज फ्यू। फ्यू इज स्मॉल और स्लाइटली जस्ट लाइक लिटिल, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंट, दैट few is countable noun, few, because few denotes number not quantity, that's why it's countable, it's not and not uncountable. Next is a lot of. A lot of means नाम से ही easily understand है, a large number of amount, बहुत large number of amount में हम किसी की बात करते हैं। sometimes it's countable and sometimes it's uncountable. So next is many. Many is very numerous, बहुत कम के बहुत ज़्यादा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब many का यूज होता है। many is countable because many denotes number, it's not uncountable. all right, much. much very to a lot के बारे में हम बात कर रहे हैं, much it denotes quantity, that's why it's uncountable noun. any, never and at, never, at all के लिए यूज करते हैं in negative sentence and with interrogative sentences. So any used with countable or uncountable both. Lots of, a lot of is different thing and lots of is different. Okay, so a lot of, it means it's countable or uncountable both.
Some an unspecified amount of और number of means कुछ unspecified amount होता है, कुछ unspecified number होता है जब हम sum का use करते हैं. So sum is countable as well as uncountable noun or determiners. All right. Okay. So we usually use, now let's see some other quantifier nouns, that is most. We usually use most with plural uncountable nouns. Most का कब use करते हैं? Plural but uncountable noun के साथ. Most of the people can be trusted. यानी बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं? Trusted हो सकते हैं. Plural के साथ use किया. People plural में आता है हमारे. Most of the time I am not at home. मतलब ज़्यादातर मैं कहाँ नहीं होता हूँ? घर पे नहीं होता हूँ. अब here people we cannot count people. अब एक पीपल की पूरी कम्युनिटी, पीपल बहुत सारे, मतलब जितने भी पीपल हैं सबके पीपल्स के बारे में बात हो रही है. टाइम भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट. सो इसके लिए हम मोस्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वी यूजुअली यूज सेवरल विथ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स को भी हम सेवरल को भी हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं. पुट इट रेफर्स टू अ नंबर विच इज नॉट वेरी लार्ज. किसमें ऐसे नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं. लेस देन मोस्ट, किससे? मोस्ट से कुछ कम होता है, तब हम सेवरल का यूज करते हैं. तो सेवरल पीपल वर क्रश्ड इन स्टैम्पेड. सेवरल पीपल लॉस देयर लाइव्स इन द सुनामी. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मोस्ट से थोड़ा कम हम यहाँ सेवरल का यूज करेंगे. सो ऑल, नेक्स्ट इज ऑल रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन. ऑल को क्या चाहिए होता है? प्लूरल वर्ब चाहिए होता है जब किसको यूज करें? वो काउंटेबल नाउन को. बट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑल जब काउंटेबल नाउन के साथ आता है, सो ही रिक्वायर्ड सम प्लूरल वर्ब, एंड व्हेन इट कम्स विद अनकाउंटेबल नाउन देन इट रिक्वायर्ड सम सिंगुलर वर्ब. सी द एग्जांपल. ऑल आर गोइंग टू दिल्ली. सो ऑल आर इज प्लूरल वर्ब. क्लियर? प्लूरल है. Going to Delhi when used with countable noun. जब countable noun के साथ हम use कर रहे हैं तब going to Delhi. All are, मतलब हम सब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं. तो उन सबको count कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे all का use किया है with plural verb. But requires a singular verb with uncountable. Singular verb कब use करते हैं? जब हम uncountable noun के साथ use करते हैं. All that glitters is not gold. So it's a proverb. So here all is uncountable. That's why we use here with a singular verb. All right. Okay. Now there are some numbers also. Number is also in quantifiers noun. So number are either cardinal means or ordinal. Cardinal भी हो सकते हैं और ordinal भी हो सकते हैं. Like what is cardinal and ordinal? Cardinal means 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोलते हैं तो उसे cardinal numbers कहते हैं. Which are adjectives refer to quantity. क्या quantity को adjective देते हैं? ये adjective है quantity के. And ordinal means the first, second, third, इन्हें ordinal कहते हैं. So 2 cars are enough for most families. So car is noun here and 2 is number. Which number? Cardinal numbers means this is a cardinal number determiners. There are about 25 people in my office. So people is noun and 25 is number. Means determiners number. It's my 40th birthday next week. Next week क्या है? 40th birthday है, तो 40th is number determiner. This is the second time you have done that. मतलब तुमने ये दूसरी बार किया है. So second is uncountable. Sorry, second is number determiners. All right. So 1, 2, 3, etc. He is blind in one eye. He had 2 daughters. Only 3 boys are sitting in the room. So 1, 2 and 3 are numbers of determiners. Alright, so here we end this topic. I hope you all have must understood the quantifier determiners. In our next video, we will see some distributive determiners. Till then, take care yourself and thank you for watching this video.